मृत्यु जिसका शरीर है और मृत्यु के अंदर जो है और मृत्यु जिसे जानती नहीं, वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा, उसके पाप नष्ट हो गए हैं और वही एक दिव्य देव नारायण है।
देह इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ हैं, इनके ऊपर मैं मेरा ऐसा जो भाव है वो अध्यास भ्रम है। इसके विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को, इस भ्रम को दूर करना चाहिए। आखिरी बात इस सूत्र में, ये जो वासनाओं की दौड़ है ये इसीलिए है कि हमें दिखता है दूर कहीं कोई सपना पूरा होता होगा। जैसे मरुस्थल में कोई देखता है, दूर मालूम होता है जल का सरोवर, दौड़ता है, जल के लिए दौड़ता है, वहां जाके पाता है नहीं कुछ, रेत ही रेत, लेकिन तब तक कहीं और जल का सरोवर दिखाई पड़ने लगता है। भ्रम है, अध्यास है। सूर्य की किरणें जब तपती हैं जोर से रेत के ऊपर और वापस लौटती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, जब वापस लौटने लगते हैं, तो कपती हुई सूर्य की किरणें जब वापस लौटती हैं, उनके कंपन के कारण भ्रम पैदा होता है कि लहरें कप रही हैं, और वो कंपन इतना सतत होता है और कंपन की एक धारा बन जाती है कि अगर पास में कोई वृक्ष खड़ा हो तो उस कंपन में उस वृक्ष की छाया नीचे दिखाई पड़ने लगती है। वो कंपन दर्पण का काम करने लगता है। और जब आपको दूर से दिखाई पड़ता हो पानी ही, और न केवल पानी, आकाश में उड़ती हुई बदलियों की नीचे प्रति छाया भी दिखाई पड़ती हो, तो भरोसा भी कैसे ना करें। आकाश में उड़ते हो कबूतर या आकाश में उड़ती हो बगलों की कतार और नीचे पानी में भी उसकी छाया हो जाती हो, पास में खड़े वृक्ष भी नीचे दिखाई पड़ते हो, तो फिर भरोसा पक्का हो जाता है कि पानी होना चाहिए। न केवल लहरें दिखाई पड़ती है, लहरों में प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। पास जाके जैसे जैसे पास पहुंचते हैं वैसे वैसे तिरोहित होने लगती है छाया, बिल्कुल पास पहुंच के रेत हाथ लगती है। अध्यास का अर्थ है जो नहीं है उसका दिखाई पड़ना। शंकर के लिए बड़ा प्यारा शब्द है और उपनिषदों के लिए बड़ा आधारभूत। अध्यास का अर्थ है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, जो नहीं है उसका दिखाई पड़ना। वो जो दिखाई पड़ता है वहां है नहीं, आप अपने भीतर से आरोपित करते हैं। आप ही कारणभूत है उसे आरोपित करने के। एक चेहरा आपको सुंदर लगता है, वो सौंदर्य वहां है या आप आरोपित करते हैं, क्योंकि कल वही चेहरा आपको कुरूप लग सकता है। हो सकता है कल तक सुंदर न लगा हो, आज अचानक आपका दिव्य चक्षु खुल गया और आपको सुंदर दिखाई पड़ने लगा, और आपके मित्रों को अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं लैला सुंदर नहीं थी, मजनू को दिखाई पड़ती। सारा गांव परेशान था और लोगों ने समझाया मजनू को कि तू पागल है, इससे बहुत सुंदर लड़कियां गांव में, तू व्यर्थ ही दीवाना हुआ जाए। तो कहा है मजनू ने कि लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। ये अध्यास है। सवाल लैला नहीं, सवाल मजनू की आंख है। सवाल वो नहीं जो दिखाई पड़ रहा, सवाल वो है जो देख रहा है। तो मजनू ने कहा मेरी आंख से देखो तब तुम्हें लैला दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसमें खतरा है, मजनू की आंख से दिखाई पड़ेगी। अगर सच में मजनू की आंख उधार मिल जाए तो लैला जैसी मजनू को दिखाई पड़ती वैसी आपको दिखाई पड़ेगी। आंख भी एक चश्मा है, चश्मे के रंग उतर जाते हैं विषयों पर। आपकी सारी इंद्रियां प्रक्षेपण कर रही है, आप चारों तरफ अपने तरफ एक जगत निर्माण कर रहे हैं। आपका मन केवल ग्राहक नहीं है, निर्माता है। आप बना रहे हैं एक दुनिया अपने चारों तरफ, सौंदर्य की, सुगंध की, इसकी उसकी, आप एक दुनिया निर्मित कर रहे हैं। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देखते हैं, ये आप पर निर्भर है। और आप बदल जाते हैं तो दुनिया इसलिए तो बदल जाती है। जवान दूसरी दुनिया देखता है, बूढ़ा दूसरी दुनिया देखता है, बच्चे दूसरी दुनिया देखता है। क्या फर्क क्या पड़ जाता, दुनिया वही है, लेकिन बच्चों के पास वो आंख नहीं है जो जवान के पास। बच्चे भी कंकड़ पत्थर बीन रहे, रंगीन होना काफी है। जवान कहता देखो भी इनको, इनमें क्या रखा, इनकी कीमत क्या है। जवान के लिए अर्थ मूल्यवान हो गया, धन
समझ में आने लगा। अब सिर्फ कंकड़ पत्थर बीनने से काम नहीं चलेगा, तितलियों के पीछे दौड़ने से कुछ हल होने वाला नहीं। बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं, तितलियां स्वर्ग मालूम पड़ती, जवान बच्चों को ना समझ समझ, फिर आदमी बूढ़ा हो जाता, इंद्रियां थक जाती, अनुभव तिक्त होते, कड़वे होते, मुंह उनकी बेस्वार्थ धारा से भर जाता। जवान भी उसको देखते हैं कि ये भी दूसरी तरह की तितलियां पकड़ रहे हैं। तितलियां बदल गई, तितलियां नहीं बदली, बस और तरह की तितलियां पकड़ रहे हैं। बूढ़े रह जाते, समझाए चले जाते, कोई जवान की सुनता नहीं। उनने भी अपने बाप दादों की नहीं सुनी थी। नहीं सुनने का कारण है आंखें दूसरी है। बूढ़े की आंख अगर जवान को मिल जाए तो उसे भी ऐसा ही दिखाई पड़े। और ध्यान रखो कि मजा ये है कि अगर अभी बूढ़े को फिर जवान की आंख मिल जाए तो वो सब अनुभव भूल जाएंगे। वो जो ज्ञान बता रहे हैं वो सब भूल जाएगा, फिर जगत रंगीन हो जाए। सुना है मैंने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस, न्यायाधीश, जब जवान था तब पेरिस आया था, शादी करके सीधा पेरिस आया। फिर 30 साल बाद जब बूढ़ा हो गया और बेटों की शादियां हो गई और बेटे पेरिस को आए, तब फिर दोबारा अपनी पत्नी को लेकर आए। उसका नाम था पेरिस। पेरिस देख कर उसने अपनी पत्नी से कहा, वो बात न रही पेरिस में, सब फीका फीका हो गया। कहाँ वो दिन जब हम पहली दफा पेरिस आए, बात ही और थी, पेरिस कुछ और था। उसकी पत्नी ने कहा, माफ करें, आप भूल रहे हैं, पीरे और था, पेरिस तो वही है। हाँ, पेरिस तो अब भी वही है, जवान की आंख से देखें, पेरिस अब भी वही। पेरिस क्या बदलता है? लोग बदल जाते, दृष्टि बदल जाती। दृष्टि के बदलने से अगर जगत बदल जाता है तो समझना कि आपने जो जाना था वो अध्यास था, जो दृष्टि की वजह से पैदा हुआ था, वो जगत नहीं था। क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि बिना दृष्टि के जगत देखा जा सके? अगर हो तो ही जगत देखा जा सकता है, नहीं तो नहीं। दृष्टियां अध्यास है, इसलिए ख्याल रखें, दर्शन का मतलब दृष्टि नहीं है। दर्शन का मतलब है वैसी अवस्था जब सब दृष्टियां शांत हो जाती, कोई दृष्टि नहीं रह जाती, तब देखना। जब अपनी कोई आंख नहीं रह जाती थूकने को, और अपना कोई भाव नहीं रह जाता आरोपित करने को, अपनी कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, मरुस्थल को तब देखना जब भीतर कोई प्यास नहीं होती, फिर मरुस्थल धोखा नहीं देता। प्यास की वजह से धोखा हो जाता, पानी की चाह होती है और नहीं मिलता तो चाह और बढ़ जाती है, और जब चाह ज्यादा बढ़ जाती है तो मन उत्थित हो जाता है, और जो नहीं है उसे भी मानने का मन होने लगता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी है जब सब दृष्टि छीन हो जाती और दर्शन का उदय होता है। कब होती है दृष्टियां छीन? दृष्टियां तभी छीन होती है जब सभी वासनाएं छीन हो जाती, क्योंकि हर दृष्टि वासना का खेल है, वासना का फैलाव है। तो सूत्र कहता है, देव इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ है, इनके ऊपर मेरा ऐसा जो भाव वो अध्यास है। इसलिए बुद्धिमान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को दूर करना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा द्वारा, अपने में निष्ठा द्वारा। हमारी निष्ठा हमेशा पराये में, किसी और में, अपने में नहीं है। दौड़ कहीं और है, अपने में नहीं है। जहां कहीं और रहे एक जगह को छोड़कर, वो जगह जो भीतर है। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है ये वासनाओं की दौड़ हट गई, आदमी अपने में खड़ा हो गया। आदमी वहीं खड़ा हो गया जहां कोई मन नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ शुद्ध चैतन्य है। उसमें प्रतिष्ठित होते ही सब अध्यास टूट जाते हैं, और तब संसार नहीं है, ब्रह्म ही है।
जब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन वे भी उपयोग कर सकते हैं। जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती वे आंख बंद कर लें और केवल ध्वनि सुने। शांत बैठ जाएं जैसे ध्यान में हो। और बहुत बार जो शब्द समझ के भी समझ में न आता वो मात्र ध्वनि सुनने से समझ में आता है। जब मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, जिन मित्रों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती वो ऐसा न सोचे कि उनके काम का नहीं है। आंख बंद कर लें और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी ध्वनि पर ध्यान करें। समझने की कोशिश न करें, जो भाषा समझ में नहीं आती समझने की कोशिश ही मत करें। बिल्कुल ना समझ हो गए शांत बैठ जाए, सिर्फ ध्वनि का आघात ध्यान करें, सिर्फ सुने। वो सुनना ध्यान बन जाएगा और उपयोगी होगा। बड़ा सवाल समझना नहीं है, बड़ा सवाल शांत होना है। बड़ा सवाल सुनना नहीं है, बड़ा सवाल मौन होना है। तो कई बार तो ये होता है जो बात आपकी समझ में आ जाती है वो आपके भीतर विघ्न बन जाती है, क्योंकि उससे विचार शुरू हो जाते हैं। कई बार तो अच्छा है कि जो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती उसको सुने, क्योंकि फिर विचार नहीं चल सकते। जो समझ में नहीं आए तो विचार के चलने का कोई उपाय नहीं है, विचार रुक जाते। इसलिए कभी तो वृक्षों के बीच से गुजरती हुई हवा को सुनना, कभी पक्षियों की आवाज सुनना, कभी पानी की कलकल धारा से उठता निनाद सुनना ऋषि मुनियों को सुनने से भी ज्यादा बेहतर है। असली उपनिषद वहां बह रहे हैं, पर वो आपकी समझ में नहीं आएंगे, पर समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। सुनना काफी है। और जब समझ में ना आए और आप सुन सके तो थोड़ी देर में बुद्धि शांत हो जाती है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं होता। और जब बुद्धि शांत हो जाती है तो आप वहां पहुंच जाते हैं जिसकी तलाश है। Man is a periphery, but also a center. Man is a circumference, but not only that. Your body is your circumference, but not you. This sutra is concerned with the identification of consciousness with the body, the identification of the center with the periphery. The body is just your abode, just a house, not even a home, just a house. You are in it, but you are not it. But the mind believes it's to the body. That is known as adhyas, illusion, projection. Why this mind takes body as identical with it, as one with it. The nearness, the constant nearness, the intimacy between the two. And body begins to be reflected in the mirror of the mind. And constant association, not only in this life, but of many lives. Bond
become one with that which has been in association with you. It becomes a habit. For millions of years, consciousness has existed in bodies. And because of that, it is identified with it. This identification is the only error, the only ignorance, the only sin. For Eastern approach, this is the original sin, to be identified with the body. How to be non-identified again? How to become aware that you are not your body, you are not your mind. How to go in and find out the forgotten center. It is always there. You are standing on it, you are it. But your eyes, your senses have taken you far away. You have gone on a journey. This journey is very miraculous. It is like a dream journey. You sleep in Mount Abu, and in the night you dream you are in London, or in New York, or in Calcutta. You have gone on a journey in the mind. The journey appears to be actual, real. You cannot remember in your dream that this is a dream. The moment you remember this is a dream, the dream will be broken. This is the basic condition in the dream, that you should not remember it as a dream. The dream must be taken as reality, only then the dream can continue. That's the basic condition. The dream must appear as real, otherwise it is broken. So in the night when you dream, the dream appears not only real, really more than real. The life seems, the real life seems pale before it. It is more colorful, more intense, more alive. You can go on a journey in the dream, and still you continue to be here in Mount Abu. In reality, you remain in the Mount Abu, but in dream you have moved. Nothing has moved, only the mind has moved. The whole world, for Eastern mind, is just a dream journey. You go on moving. You remain constantly at the center, but you go on moving to the periphery, to the circumference. You look at some face, beautiful, some body, a personage. It appears the mind has moved. No, you are not at your center. You are not at your home. You have gone away. Now you will follow. Your mind will move. Any desire is a movement. Any motivation is a movement. Movement of the mind. You see a beautiful car, or you see a rich palace, and the mind, it starts desiring. You start moving. You remain at the center, but the mind is not there. You have forgotten the center.
Now the mind is attached with the objects of desire. Those objects of desire become your clinging. That's why mind goes on and on, out and out. And you are at the center. This creates a division. This divides you into two. And because you never return to the center, you never go back to it, ultimately you forget that you are the center. More civilized, more cultured, educated, the world becomes more centerless. Everyone is just a circumference. The master is missing. The house is there. The center is not there. And even if you try to reach the center, you cannot reach it because you don't know how to reach it. And the ways and the means you try to reach it really are not means and ways. They are the barriers. Because you try to reach the center in the same way as you try to reach the circumference. You know only one way. How to move to the circumference. How to desire. You desire for riches. You desire for power. You desire for sex. You desire for so many things. The mechanism of desire is you desire for something which you have not. You desire for something which can become possible only in the future, never in the present. Desire is meaningful only in reference to the future. You cannot desire immediately here and now. You will need time. Desire needs time to move. So you desire for the tomorrow. You say tomorrow or in the next life. This will happen. This I would like to happen. I hope for this. Desire is basically future oriented. And desire means something which you don't have. This mechanism, if you apply to the inner journey, will become a barrier. This mechanism cannot help. Because the basic situation differs. Not only differs, it is absolutely diametrically opposite. Your being, your center is not something to be achieved in the future. It is here and now. It is already the case. You can have it immediately. No time is needed to move to it. Really, no movement is needed. Just an awareness, and you are there. You have not moved away. You are just unaware. You have not gone anywhere so that you have to come back. You have never gone. Unreally. Only in dream. You are sitting in Mount Abu in the dreams of London. And someone suddenly awakes you. Will you be awake in London or in Mount Abu? Or will you tell that wait, I am in London and now I need to come back to Mount Abu? No, from a dream. If you are awakened, you are suddenly here. The dream world, the dream journey disappears completely.
stops and says, do not seek, otherwise you will miss. Do not seek and find. Look at it. Do not seek and find. Looks illogical. It is not. It looks illogical because we know only one logic, the logic of desire. If someone says, do not find riches, do not seek riches, and you will find, it is illogical. You will never find. If someone says, don't long for worldly things, then you will find them. No, you will never find them. You will have to seek. Then only it is difficult to find them. But it is not illogical for the inner journey. Note it, understand it deeply. The inner journey is just the reverse. From center to periphery, this is the way. Create an object of desire and then move towards it. The reverse is the way which goes in. Don't create any object of desire. And don't move. And you will reach it. Because you are already there. Any movement, anywhere, and you will miss your center. No movement, and you are there, suddenly awakened. But because we know only one logic, one method to reach a certain thing, we go on applying it towards the inner journey. That creates hindrances. They are self-created. Nothing is to be done to reach the center. I repeat, nothing is to be done to reach the center. It is there. If you can be in a non-doing moment, you will find it. As you can say it, non-doing is the doing for the inner center. Non-desiring is the way for the inner center. Just being, not becoming, is the beginning of it. But the mind will ask what to do. Even if I say, don't do anything, the mind will constantly go on asking, but how? How not to do anything? What to do to achieve this non-doing? This non-action? How it is to be achieved? And how means something is to be done. So one secret I will tell you. All the techniques of meditation, the one which we will be doing just after the talk. All the techniques are really just toys to play with. Because the mind goes on asking what to do, so the technique supplies you. Do this. By that doing, you are not going to reach the center. But by that doing, suddenly you will be absorbed. Suddenly, totally moving in that doing, the doing will stop. As I said last night, you cannot be angry totally. If you try to be totally in anger, anger will disappear and compassion will arise. You cannot be hating totally. If you hate totally, at the climax,
hate will disappear and love will arise. You can be in love totally. The same. If you do, in no doing you can be total. Your being remains out of it. You go on doing a certain thing, your being remains out of it. It can never be total. You walk. Can you walk totally? You cannot. Because a certain inner point remains non-walking. It will never walk. You go on to the moon. It will never go anywhere. It will remain there, inside. Just sitting there. That's why if you love, then your love is an act. An action. Then your love too cannot be total. If you are doing love, if you are making love, love too cannot be total. Because no action can be total. The being remains out. The love can be total only if you become love. It is not a dream. You are love. You are not making love. Your very being is love. That's why hate cannot be total, because your being will never become hate. You can hate someone, but your being can never become hate. Your being can become love. No doing, no action can be total. Only being can be total. So I will suggest you a method to do. And the trick, I will be allowed to call it a trick. And the trick is this, that if you go totally in it, suddenly a moment will come, all doing will cease, all effort will cease, and you will be thrown back to your feet. And there will be no doing, no effort. Simple existence, innocent existence, just being. Tanka, one Zen master, was standing on a hill, just steady. 3 persons were walking, just taking a morning walk. So they started talking about Tanka, what he is doing there. The first one said, sometimes he goes there to find out his cow. The cow, it seems, didn't return in the night back. So he has gone there and he's just looking from a high point where the cow is. But the second one says, this seems not right. Because Tanka is just standing without moving. If you were searching something, he must move. His face seems fixed. And even from this far away point, we can infer his eyes are closed. The second one said, I propose another hypothesis. He is not looking for his cow. Rather, he is waiting for some friends who might have accompanied him, but are left somewhere behind. He must be waiting. But the third one said, he cannot be waiting, because if someone waits, sometimes he looks back. He never looks back. He's just sitting like this picture. So I propose the third idea. He is meditating. It was difficult to decide. And they are good. So ultimately they decided we must go to him and ask what he is doing. So they went. They asked Tanka, what are you doing?
The first one said, are you in search of your cow? The cow has not returned home. Tanka is reported to have said, I have no home in this world and nothing to miss. Who has said to you that I have a cow? The cow is there, of course, but I don't have it. So there's no question of finding it, searching for it. So the second one was delighted and he said, then my hypothesis is going to be right. You are waiting for some friends who are left behind. Tanka laughed and said, I have no enemies, so I cannot have friends. And I am alone, so I cannot leave someone behind. I came alone in this world. I am alone in this world, and I will leave this world alone. So I am neither disturbed by enemies nor by friends. Then the third one was, of course, delighted. And he said, now nothing is left, and my hypothesis is right. You are meditating, are you not? Tanka said, I am not meditating. Because really I am not doing anything. I am just standing. I am existing, not doing anything. But this is meditation. Meditation is not doing something. But you cannot take a jump immediately into non-doing. So I suggest, make your doing total. Move into it so deeply and so totally that suddenly the doing counts. And you are alone left, just existing, just like a tree. Of course aware, but just like a tree, just like a flower, aware, but just like a flower existing, just like a stream flowing, aware, but just like a stream. No mind, just you alone, no thoughts. When there are no thoughts, you cannot move from the center. You move through thoughts. Thoughts are the ways towards the periphery, and no thought is dropping back to the center. Now, I will tell you something about the technique we are going to use. 4 steps. First step, 10 minutes fast, chaotic breathing. With no system. This is not a yoga exercise. Chaotic, anarchic. Why? Because if you use any systematic freedom, any rhythm, the mind can control it. Mind can control any system. Mind is the great systematizer. So we are here to break the systems, the system of the mind. So breathe chaotically, like a madman. Fast. Take the breath in as much as you can and throw it out. Take it in and throw it out. Fast with no rhythm. So that mind is just socked. And breathing is a great device to sock the mind. You must remember that with every emotion, breathing changes. And every emotion has its
own system of breathing. When you are in love, breathing is relaxed. When you are angry, breathing can never be relaxed. When you hate someone, breathing is different. When you are in compassion, breathing is different. When you are at ease, breathing is so silent that you cannot even feel it. When you are tense, breathing cannot be silent. You can feel it. This chaotic breathing belongs to no emotion. So simply by doing it, you transcend emotions as a mechanism of the mind. And the mind is just thrown off. It cannot continue. 10 minutes mad, fast breathing. Second step is a deep catharsis. You have to throw yourself out. The mind has to be thrown out. Laugh, but madly. Totally. Cry, weep, whatsoever comes to your mind. But madly. Jump, dance, do whatsoever comes to your mind. And if nothing is coming, then do. Try something. Because mind is alarm suppression. So sometimes you feel nothing is coming. Start. Choose anything. Laugh, cry, scream, jump, dance. But do something. Don't just sit there. Do something. And whatsoever you are doing it, do it exhilaratingly. The second step, you must throw your whole civilization, the whole culture. Just be like children, with no fear, the fear of the others. Your eyes are to be closed. You have to use the blindfold. In the third, when all the nonsense that is suppressed is thrown out, when all the madness is thrown out, you have to use a mantra. The mantra is the sound of who. Who? Meaningless. It is just a sound with no meaning attached to it. Just who. It is not W-H-O. It is H-O-O. Who. Loudly you have to make it and dance with it and move it in totally so that you are adjusted completely. And in the fourth step, you are not to do anything. You are just to fall down and be as a dead.